एक रेसिपी करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी उठा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बताता हूँ मैं। 2 चम्मच बेसन, 1 कप पानी, यहाँ खड़ी धनिया ली है, सौंफ, लौंग और यहाँ पे काली मिर्च ली है। हम लोग ने 7 से 8 लौंग ली है और 8 से 10 हम लोग ने काली मिर्च ली है, इलायची ली है, नमक लिया है, थोड़ी लाल खड़ी मिर्च ली है हम लोग ने, ये सूखी हुई लाल मिर्च आप देख सकते हैं, और ये मेथी दाना और ये है जीरा। राजमा को हम लोग ने बॉइल कर लिया है, इसलिए हम लोग ने सोडा डाल के बॉइल किया था। हम लोग ने ऑयल लिया है, ये लिया सोडा, खाने वाला सोडा है, ये जीरा लिया है, ये मैदा लिया है, ये दही लिया है हमने, और ये हमने टमाटर लिया है, इसमें हम लोग ने लहसुन लिया है, मिर्चा लिए है, प्याज लिया और अदरक लिए हम लोग। और चलिए आइए बर्तन पे, एक तवा लिया है, एक ये चमचा लिए सब्जी अपनी चलाने के लिए, और यहाँ 2 कढ़ाइयाँ। गाइस चलिए बनाते हैं। ये हम लोग पहले इसमें थोड़ा गड्ढा कर देख सकते हैं, ये गड्ढा कर लेते हैं, गड्ढा कर लेते हैं, और इसमें हम लोग ने आधा कटोरी लिया है दही, आधा कटोरी दही डाल देते हैं, बहुत कम डालना है, एक चुटकी खाली सोडा डालना है, सोडा डालने पर चला लेना है। मार दिया है, देख सकते हैं आप, पूरा डो बन चुका है एक अच्छा सा। और अभी हम लोग का एक काम बाकी है, में ऑयल थोड़ा सा लगा के हम लोग तभी डो बनाएंगे। The sense of danger from Bar and Jack in a bottle of coke. We are the people of simple pleasures. Sophisticated is not for the broke. We are young and shameless.
मसाला डाल दें पहले। 1.5 चम्मच डालने के बाद हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। ये याद रखिएगा, हम लोग जब पीसने वाले थे तब लोग डाल ये थोड़ा स्वाद अनुसार डालिएगा। 2 चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा। अब इसमें हम लोग तेल लगा चुके हैं, इसमें हम लोग टिक्की डाल देंगे अपनी, जो हम लोग ने टिक्की बनाई थी राजमा की। तेल हम लोग का गरम हो चुका है। अब हम लोग का जो ये था, हम लोग पहले वही वाला बाउल ले लेंगे। और जो हम लोग मसाला डाल लेंगे। मसाला डालने के बाद चटनी भी ले लेंगे, नमक डालेंगे। ज्यादा होगा क्योंकि हम लोग ने और सामान डाला है, और हम लोग पानी से इसको बना लेंगे। चालू कर दिया हम लोग ने। इसमें हम लोग डालेंगे, गैस हम लोग मीडियम रखेंगे। इसको हम लोग फोड़ते रहेंगे लगातार। चटनी बनाई थी, पड़ जाएगी। डाल दिए, इसको चलाते रहेंगे। अब इसको हम लोग को थोड़ी देर ढक के पकाना है। देख सकते हैं चला रहा हूँ। इसको पूरी साइड से समेट के इसको ढक के रख दूंगा और फ्लेम हाई रखूंगा। हम लोग ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल दिए, जब तक ये हो रहा है क्योंकि मैं सारी बना चुका हूँ। मैं अपना ये उठा देता हूँ। चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं मैं हर थोड़ी देर में ऑयल डाल दे रहा हूँ थोड़ा। इसमें जले ना, हम लोग को अपनी सब्जी में ध्यान रखना है, नीचे ना लगे, इसलिए चलाते रहना है। सब्जी बनी है, अगर आपको सब्जी बनानी है थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, आपकी लिक्विड बन जाएगी। तो कबाब और सब्जी बन चुकी है। हम लोग पराठा पूरा सेक चुके हैं, हम लोग पराठा निकाल लेते हैं। अब चलिए हम लोग बस डबली कबाब लगा दिया, हमको फैला देते हैं पूरे में। देख सकते हैं पूरा फैला दिया, लगा देंगे।
फिर I wanna be